आप बोल रहे थे ना कि एक्चुअली इनिशियल घटना 2017 की थी, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ यहाँ सस्पेंड करके हटा दिया। बाद में जब यहाँ कोर्ट से ऑर्डर हुआ डीजीएमपी के लिए कि आप यहाँ कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें, तो इनको वही पोस्ट कर दिया। वो पोस्टिंग ऑर्डर किस तारीख वो का? ऑर्डर नहीं है ये सर। जो ऑर्डर है जो आप थोड़ा तो मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्या हुआ, उसको सब इंस्पेक्टर को इसलिए रखा एसएचओ को क्योंकि उसको पहले का ज्ञान था, वो पहले पैरे में था। ज्यादा ही ज्ञान था ये उसको। ये नहीं, ये मैं कहना मैं नहीं पढ़ चाह रहा हूँ, चूंकि घटना एवं यही उक्त है। अपराध इसी बात सही उक्त अपराध की कायमी के समय निरीक्षक अभय प्रताप सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ होकर उनके द्वारा प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना की गई। चूंकि निरीक्षक अभय प्रताप सिंह को उक्त प्रकरण की पूर्व से जानकारी है, अतः निरीक्षक को सच यातायात प्रभारी के पद से हटाया जाकर वहीं भेजा है। वही कर दिया। ये आप बताओ मेरे को कि जब ये सोनू कलावत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया 18/11 को हुआ है। हाँ, तो इसने जानकारी मिलने के बाद क्या किया इसने फिर? इसने नहीं, इसके भाई बाद- जिसको इसमें भाई तो ऐसा एसआईटी हो गई सर, और एसआईटी बघेल साहब के अंडर में कंस्टिट्यूट हुई। जो भी हो, जी। ये आदमी को जस्टिफाई किया आपने ट्रांसफर करके वापस आर1 में आगे पहले कि के उसको उसका- पहले था, उसके बाद तो रहा ना नवंबर 19 के बाद। हाँ, ये रहा है तो ऐसा लग रहा है। हाँ, तो नवंबर 19 के बाद क्या किया नवंबर उसने? 19 को ऐसा लग रहा है सर कि इसी के टाइम पे वो रिकॉर्ड हुआ उसका स्टेटमेंट। उसके बाद क्या हुआ? तो ये देखा आपने, इस केस में ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि किस तरह से एक केस है जिसमें एक जो ये वीडियो हमने पहले शेयर किया था। एसएचओ हैं और वो थाने पे पदस्थ होते हैं, वहाँ पर एक लड़की गुम होती है और बहुत विभत्स सा वो केस है, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है उन लोगों को समझौता करवा देने में, मतलब आरोपी और पीड़ित के बीच में। इससे कोर्ट इस पे संज्ञान लेता है, पूछता है इस के बारे में, और वो जो रिपोर्ट आती है उसमें जो आरोपी है उसको वो कह दे रहे हैं, जबकि आरोपी के अपने बयान हैं कि ये मैंने उसको मतलब उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको मार दिया। बावजूद इसके पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिख रही है कि भाई ये तो इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। इस मामले में सीनियर अधिकारी को बुलवाया गया, सीनियर अधिकारी से पूछा गया कि आप बताएं, आप क्या कहते हैं, आपने क्यों इसको दोबारा पदस्थ कर दिया। तो ये एक मामला है, इसको देखिए आखिर तक। बहुत सारी सीख हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिस्टम के लिए, हम सब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी। नहीं, और कुछ है आशीष? यही है अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह है लॉर्ड, निरीक्षक अभय प्रताप सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी आर1। और देखो आजकल कहाँ पे है वो वो भी पता चला। देव शायद वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आड़े वहां पहुंच गए हो, किसी वो क्या होता है वो आरटीओ के साथ लग गए हो। भाई प्राइस पोस्टिंग मिलनी चाहिए ना ऐसे लोगों को। कटर हाँ, कटर होता है। ये और सर ये जो इनकी पोस्टिंग की गई आफ्टर पनिशमेंट की है, इनको पनिश कर अरे दिया इस भाई केस में। दे आर डेकोरेटेड ऑफिसर्स प्रताप सिंह अच्छे। भाई, दे डांस टू द ट्यून ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब आपने देखा नहीं कल टीवी में क्या आ रहा, परसों टीवी में आ रहा था ना कुछ, अजमेर वाला देखा था सर, अजमेर वाला देखा नहीं वो कल देखा था। हम भी टीवी देख के बोल रहे हैं आपसे। हाँ, टीआई साहब कह रहे थे कि ये बोल दो। बिल्कुल वही है सर। देखा राव साहब आपने क्या स्थिति बन रही है? थोड़ा सा बोलिए आप इन लोगों को। ये तो एक सैंपल है हाईकोर्ट, ऐसे ऐसे कितने केसेस आपके यहाँ होंगे जो यहां पहुंच नहीं पाते। उनकी प्लाइट सोचो। You have more officers than constables, it appears. And officers cannot go beyond certain limits. They will say, no, I am the SP. I am SSP. I am not supposed to go to police station. Why should I go? My job is to ensure that if some minister comes, if chief minister comes, I am available to him.
protocol or take his instructions to ensure that persons are not uncomfortable named by them. Punctuality is so apparent when the political executives are here, anywhere. But what about visiting the police stations? What about ensuring what these additional SPs, SHOs, head constables, sub-inspectors, what are they doing? There has to be review of investigation, a review of the functioning of the police stations. When will you give me all these details? The election is most important thing in India. But for election, the functioning of India is always imperiled. See, now elections are round the year. So this is a very pious incident in India that throughout year there is an election. You call it celebration, whatever you call it, but unfortunate part is it is at the cost of the public and public funds. Most important thing in India is holding of elections. Rest of the things will always take a back seat or would be lower in preference. Election is always at center stage, no matter what happens across country. I will not write detailed order today. I have given you all the points on which I need your explanations, and be careful. Don't try to put something more than what was there. Please don't do that. If there is a lapse, we are here to see that there is no recurrence of such situations. But we have to write something about the lapses, if any, only for the purpose so that the police force is revamped and you are not criticized in public domain. That is the purpose of calling you here. We have deliberately not called you DG, otherwise we would have called him also. But I thought it is always better to first talk to you because you are the immediate boss over these SSPs and SPs in this zone. Please take stock of situation and ensure that they overcome this hangover that they are IPS officers, therefore they are supposed to sit in air-conditioned offices only. Please tell them to go to the field, take stock of the situations, meet those poor villagers who suffer with a fear psychosis, unable to reach the police stations because of the fear of the SHO. Please, I request you. Sir, as long as I'm in this post, I promise that my best efforts will be done, sir. I assure you, Honorable Court, that we will do. I want it to be in system. Yes, sir. You being the head of the Chambal and Gwalior division or Gwalior division, please also tell your counterpart. I will, sir. Please do it. Otherwise, once the people get agitated now, Sir. and things are beyond their, if you test their patience, and it goes beyond that, it will be very difficult to control the mob. And you have seen the instances where police personnel were also given beating by the public at large. There are instances in India. I don't want such things to happen in Madhya Pradesh.